So we'll talk. We'll start straight away with conscious business. How to do business by keeping the values intact. और बहुत बार ना ऐसे मीटिंग से मैं सुनता हूँ, कोई मेरे को आता है मिलने विद अपॉर्चुनिटी टू कोलैबोरेट विद बुकलेट गाय, और कभी कभी ऐसे वर्ड यूज करते हैं ना वो, देखो भाई हम लोग अल्टीमेटली पैसा कमाना है, धंधा करना है. सो व्हेनेवर दे से दीज थिंग्स आई बिकम लिटिल अनकंफर्टेबल. ठीक है, पैसा है इंपॉर्टेंट, कौन नहीं बोल रहा है भाई, बट अल्टीमेटली पैसा कमाना है. सेइंग दिस इटसेल्फ खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है, बिकॉज अल्टीमेटली पैसा नहीं है. अल्टीमेटली इट इज अबाउट गिविंग वैल्यू टू द सोसाइटी, एंड देन मनी विल हैपन टू यू नेचुरली, राइट. सो अल्टीमेटली जो वर्ड है ना वो यूज करते तो मुझे बहुत बड़ा बड़ा बुरा लगता है. सो काइंड ऑफ वोकैबुलरी दैट वी यूज इन बिजनेस plays such a vital role, as this book talks about conscious business, that you have to be very conscious when you use your words in business, especially words coming from the top management. मैंने अभी एक मीटिंग अटेंड किया, सेल्स का मीटिंग था, और बॉस ने क्या पूछा मालूम है सेल्स लोगों को, आज कितने बकरे मिले तुमको. जो बॉस क्लाइंट को बकरा वर्ड यूज कर रहा है, तो वो बंदे एम्प्लॉयज क्या, हाउ हाउ दे गोइंग टू रिस्पेक्ट देयर क्लाइंट्स. तो खुद ही बोल रहा है कि अपना क्लाइंट बकरा होता है. सो सो बैड, राइट. और बकरा है तो फिर क्यों करो, तुम कसाई बन जाओ ना भाई. इफ यू डोंट मीन इट, व्हाई आर यू यूजिंग इट. डू यू रियली मीन इट कि हाँ मेरा क्लाइंट बकरा है? नो, तो व्हाई यूज सच वर्ड्स, राइट. जैसे आजकल मेरे को एक ने पूछा, व्हाई अमरुद यू डोंट यूज द एफ वर्ड. व्हाट, आर यू श्योर इट्स द राइट क्वेश्चन दैट यू डो, व्हाई डोंट यू यूज द एफ वर्ड. ये आज वाकई में कलयुग है कि तुम अमरुद गाली क्यों नहीं देते, ये सवाल बन गए. तुम गाली क्यों, मुझे लगा वो पूछ रहे कि वो पूछना चाहता है कि तुम गाली क्यों देते हो. जो गाली देने वाला है उसको ये पूछना कि तुम गाली क्यों देते हो, ये सवाल मैं समझ सकता हूँ. पर जो गाली नहीं देते उसको पूछना कि तुम गाली क्यों नहीं देते हो. तो मैंने उसको बोला कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है कि व्हाई डिड यू रेप दैट गर्ल इज राइट क्वेश्चन, या व्हाई डोंट यू रेप गर्ल्स. ऐसा से सवाल पूछना. But then, since that I was thrown with that question, I had to answer that question. Why I don't use that F word just because everybody is using it. And using the F word is so common nowadays, right? Whether it is, stand-up comedians love that word. उनको लगता है कि वो ऐसा गालियां देने से बहुत बड़ा लाफ्टर आता है. So I took a long pause, and then I said that, look, everything that comes out of our body, human body, stings. पसीना stings, या कान का मैल स्टिंग्स, म्यूकस जो नाक से आता है स्टिंग्स, यूरिन और एक्सक्रीटा तो दूर की बात है, वो तो स्टिंक होता है. एवरीथिंग दैट कम्स, सलाइवा स्टिंग्स, एवरीथिंग दैट कम्स आउट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बॉडी स्टिंग्स. देन द ओनली थिंग दैट कम्स आउट ऑफ माई माउथ which is in my control that it should not stink are the words, whether the word should be beautiful or words like these F words. अच्छा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कुछ ऐसा ट्रेनिंग लिया है. इट वॉज नॉट इन माई कल्चर सिंपली. मेरे मेरे परिवार में कभी मैंने ये वर्ड यूज सुना नहीं, मेरे दोस्तों में कभी सुना नहीं, तो मेरे मेरे जुबान पे नहीं आ रहा बस. देयर इज नो बिग रीजन एज सच. सो वॉट एवर वॉट एवर आई स्पीक, वॉट एवर वर्ड्स आई यूज, दे रिप्रेजेंट माई मदर, दे रिप्रेजेंट माई फैमिली, माई कल्चर. If I'm out of Maharashtra, I'm in Delhi, and I'm speaking, my words represent my Maharashtra state. If I'm in Dubai, my words represent my country, India. Then I might as well use those words very mindfully and consciously, whether I'm in business or in any personal encounter. And I was really disappointed when I was asked this question that why you don't use F word. So कहने का मतलब यही है कि so culture, business culture is a very vague term. So बहुत अच्छे से इन्होंने इक्वेशन दिया, कल्चर इज इक्वल टू वैल्यूज प्लस कम्युनिकेशन, या वैल्यूज प्लस कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कल्चर. सो कम्युनिकेशन में व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स डू वी यूज व्हाइल इंटरेक्टिंग विद आवर एम्प्लॉयज,
is very, very important, especially words used from the top management. Yeah, I remember एक बार क्या हुआ था, शू कंपनी का एक ऑडिटोरियम में एग्जीबिशन था, मतलब कुछ समिट था. All the shoe companies of the world had come together, right, to discuss. So there was a huge auditorium of some 2,000 people in the audience. And the CEO of Sparks company, there is some brand called Sparks in shoes, in footwear. वो आया और and he spoke about कि हमारा जूता कितना अच्छा है, हम ये डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, अब ये स्पेशल ऑफर है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट, एक लोगे तो दो फ्री, दो लोगे तो एक फ्री, जो भी है. So he just focused on 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 manipulative practices. Okay, there are some companies who value promotion, and there are some companies who promote values. I repeat, there are some companies who value promotions. There are some companies who promote values. आप दुनिया के कितने भी सब सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन्स देखो, दे ऑलवेज प्रमोट अ वैल्यू, नॉट अ स्ट्रैटेजी. आई गिव एन एग्जांपल. तो यही एक एग्जांपल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. तो वो स्पार्क्स का बकबक करके चला गया, थोड़े लोग ने ताली बजाई और चले गए. फिर आया फिल नाइट, जो नाइकी शू कंपनी का मालिक है. यू नो व्हाट ही सेड? द ऑडिटोरियम इज फुल ऑफ 2,000 पीपल, बट आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. हाउ मेनी ऑफ यू रन? एंड ओनली 25 पीपल स्टूड अप. हाउ मेनी ऑफ यू रन, प्लीज स्टैंड अप. 25 लोग 2,000 में से खड़े हो. दोज हु आर स्टैंडिंग, out of those 25, he asked, how many of you run at least 5 days a week? और 25 में से 5 लोग बैठ गए. और पूरे ऑडिटोरियम में, 2,000 लोगों के ऑडिटोरियम में सिर्फ 20 लोग खड़े थे. एंड यू नो व्हाट ही सेड? फिल नाइट, वी आर फॉर यू, दोज हु आर स्टैंडिंग. वी आर फॉर यू, where no matter whether it is dry or raining outside, you don't snooze your 5 a.m. Alarm and push your butt out of bed and run. We are standing at the fourth mile to cheer you up. We are the Nike people. And the whole auditorium stood up, in standing ovation. See what kind of words he used. जूते का तो जिक्र भी नहीं किया उसने. He did not say that Nike sells shoes. But what did he do? He promoted a value that we stand for the athlete in you. We stand for healthy living. He just used running as a representation of healthy living. We stand for athletes. Athletes, matlab not only the athletes which participate in Olympics, but the athlete within you. If you get rid of your laziness in the morning, you're an athlete. Now, you might be thinking कि क्या इसमें रिस्क नहीं है क्या, कि फिल नाइट ने सिर्फ वो 20 लोगों को अच्छा अच्छा महसूस करने दिया, तो बाकी के जो 1,500 12 लोग थे, वो मायूस हो गए. अभी वो नाइकी का शूज लेंगे नहीं. ऐसा है क्या? किसी को लग रहा है ऐसा है? ऐसा नहीं है. आपको लगेगा कि ये नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है ना, वो कोटलर बोलता था कि एवरीडे सबके लिए प्रोडक्ट बनना चाहिए, वो जमाना गया. अभी हुआ क्या यहाँ पे? जो लोग बैठे हैं ना, जो खड़े हैं ना, वो तो पूरा क्लाउड नाइन पे, दे हैव बिकम द परमानेंट एडवर्टाइजर्स ऑफ नाइकी, राइट? बिकॉज उसकी कॉलर टाइट हो गई. और जो बैठे हैं ना, they would want to become part of that niche Nike people. भले वो जिंदगी में कभी भागे नहीं है, but they will wear Nike shoes to boast that I am an athlete. जिंदगी में एक दिन तो कोई भागा होगा ना, वो खुद को एथलीट समझेगा वो, और नाइकी शूज लेगा. Got it? So by negating majority of the audience and standing only for those people who are athletes, my through their mind, not as a sportsman, Nike became an everybody product.